मैं बुक चेक कर रही थी। Guys, please mute yourself. Okay, so I believe we are good. Just one more minute, then we'll start. All right. Hi, everyone. Very good morning to all. And welcome to the class. So now we are going to start this session. So Bijay sir, you are the host and you can probably kick off this meeting. And if you want to discuss with audience or professionals, you can discuss also as well. Let me make the recording start. Now recording is started. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, hey everyone. Good morning. Okay, so let me share my screen and I'll just confirm once it's visible with you guys. Okay. So hope so it's visible with you guys. Is it visible? Guys, please confirm. Yes, visible. Yes. Yeah, thank you so much for the confirmation. Okay, so today is our first day of this Palo Alto session, guys. Okay, and we will initially we will go slow by slow. Okay, we will go slowly only. Okay, and just let me know, guys, if you have any concern. Okay, if you have any doubt, just let me know. We will cover that one part. Okay, and I will just also update like once I will finish the topic. Okay, so I will inform you like this is the any doubt. If you have any doubt, just confirm. So you just confirm, then we will go ahead. Okay, so guys, first of all, let me tell you about myself. Okay, guys, so my name is Vijay Prajapati and I have total 10 plus years experience in the network security domain. Okay, until now I work for many MNCs company like Infosys, Wipro, HCL, TCS and everything. Okay, and okay, so let's start today's session. So first of all, guys, I've already covered these topics. Okay, this is our course content. Okay, during this course, we will cover all these topics. Okay, and apart from this topic, we will cover other extra topics like virtual wire, then zones, then administrative accounts. Okay, and password complexity. Okay, so that part we will cover in this one. Okay, and let me tell you. Okay, so let's start. Okay, second. Okay. So first of all, this is a guy's network security terminology, okay, and this is one of the basics things, okay, like you already, I think, learn about this one in the CCNA security courses, okay. So what is this? Let's cover quickly, okay, and just let me know if you have any doubt and everything, guys, okay, and just confirm if everyone is like comfortable with English or someone is like comfortable with Hindi also. Just please confirm. Then we will cover that Hindi also. So everyone is comfortable with Hindi or English? Please confirm, guys. So guys, if anyone having any language barrier, right? If you're not able to understand Hindi or English, just highlight. So at least we'll try to cover your language as well, right? So at least everyone is going to be catered, right? So please, anyone having any issue not understand Hindi? विजय हिंदी कर सकते हैं आप No, Okay. but any issue with not English Hindi, then we will go with the Hindi only. So सबको Hindi okay, guys? So we हाँ can चलिए ओके Is ready to pair. everyone Yes, sir. Hindi में continue करिए. No, English. actually, I can see Bijay sir, there is some English audience as well. So no worry, guys. Yeah, let's continue in Hindi, English. Hindi, English, both. Not So an issue. yeah, Okay. You can continue in English. yeah, yeah. Sairam. Noted. Okay. Okay, not an issue. Thank you so much for the confirmation, guys. Okay. So let's start. Okay. So this is the guys basic terminology. Okay, network security terminology, and we will go one by one. Okay, what is the asset? What is the vulnerability? Okay, and exploit. What is that exploit? Threat, attack, and countermeasure. Okay. So this is a basics thing. Okay, and so let's start. Okay, first of all, what is the asset, guys? Okay, so asset, which means the valuable data, which means value, anything is valuable for our organization. Okay, suppose there is some systems of computers are available, then some applications and applications data. Then some applications data.
Okay, and let me mute everyone. First of all, yeah. Okay, so that's the it's called the asset. Okay, so you can say any computers, applications, any data. So it's called the asset, guys. Okay, now next one is a vulnerability. Okay, so vulnerability, which means the weaknesses in a system. Okay, there is a many type of the weaknesses we can say, like it's a system application, vulnerability, application vulnerability, network vulnerability. Okay, so it can be anything, either application, operating system, or maybe network protocol. Okay, so in the network protocol, you already know there is like we can say the example of the vulnerability is the telnet and HTTP. So let me give you the one example. Okay, suppose here is one system is available and it's connected with the one particular switch, and this switch is connected with one router. Okay, and through router there is the one internet, and this is another router is available, and it's connected with the one switch. Okay, and this switch is connected with particular one machine. Okay, so some there is suppose this is the one of the Delhi site. Okay, and this is the Bangalore site. Okay, so this site is a Bangalore and this is the, so this is the Delhi and this is the Bangalore site, and both are the same organization. Okay, so suppose this particular user is available, and he can access this router, but he wants to access this Bangalore router as well. Okay, so here we can configure as a telnet. Okay, and we can access the this particular router from here. So क्या होगा यहाँ पे that particular users whenever he is trying to communicate this particular router, he wants to access this router via telnet, then data will pass through in the plain text, guys. Okay, plain text, which means the anyone from the internet. Okay, anyone from the internet, यहाँ पे कोई हैकर बैठा होगा, कोई भी बंदा बैठा होगा, और यहाँ पे वो डेटा थ्रू बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पे. सो दैट थ्रू सॉफ्टवेयर्स he can see what type of data traveling through from here to here in this communication. Okay, so like this particular attacker can see what is the username. Suppose यहाँ पे this particular user wants to access this router. Okay, and suppose the username is admin and password is 123, then he try to tell that here. Okay, so whenever attacker is available, then he can access what is the username and what is the password, so that data is showing in the plain text, so anyone can see that particular data in the plain text. Okay, so this is the one type of vulnerability in the network protocol, guys. Okay, so यहाँ पे कोई भी डेटा जाएगा ना, वहां पे एक्सेस करेगा. यहाँ पे तो जब भी वो एक्सेस करेगा, फिर वो एडमिन यूजर नेम करेगा, पासवर्ड डालेगा, और उसके बाद शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करेगा. तो यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा ना, वो पूरा का पूरा प्लेन टेक्स्ट में आएगा और पूरा का पूरा डेटा वहां पे वो शो करेगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द HTTP. सपोज हियर इज थ्रू स्विच there is a one web service available. Okay, and this particular user wants to connect this web server, okay, through HTTP. Okay, so what will happen, guys? Same thing will happen. Okay, so whenever he try to access this web server through HTTP services, okay, and he enter the password like for an example, admin, and password is also admin. Okay, so it will be the showing in the plain text only. Okay, so क्या होगा, यहाँ पे कोई भी अटैकर रहेगा तो वो HTTP के थ्रू जो भी कनेक्शन जाएगा, तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड वो देख पाएगा, और जो भी डेटा यहाँ पे थ्रू HTTP जा रहा है ना, वो पूरा का पूरा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, तो आराम से वो देख पाएगा. मतलब ये क्या है, एक पूरा वर्नेबिलिटी है यहाँ पे. सो वो नेटवर्क प्रोटोकॉल में हम वर्नेबिलिटी बोल सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारी वर्नेबिलिटी रहती है, और जो अटैकर रहती है वो वर्नेबिलिटी को ही टारगेट करेंगे, और उसके बाद वो पूरा का पूरा लाइक वो एक्सेस करेंगे. ओके, सो अटैकर विल अटैक ऑन द वर्नेबिलिटी ओनली, whatever the vulnerabilities they will found. Okay, and they will attack on that particular vulnerability, and they can access to the network only. Okay, so this is we can this is the vulnerability. Okay, this is example. We can cover this vulnerability through our protocol like telnet. We can cover through SSH. Okay, so SSH is a secure connections, no one can read that data. Okay, it will be the encrypted data, guys. Okay, and through HTTP we can cover through HTTP.
Yes, okay. So it will build the connection securely on the from the client to server. Okay, so the data will be traveling through securely. Encrypted data will travel. Okay, and there is a SSL tunnel will be established between the client and server. Okay, so that part we will cover during our session when we discuss the SSL decryptions. Okay, so that part we will cover. Okay, so this is the vulnerability, guys. Okay, now next one is the exploit. Okay. Okay, so yeah, here is the it's a way or method used by the attacker. Okay, here you can see in the picture there is a three windows available. Okay, and the one window is open. Then this particular attacker is attack on through this window, open window. It's called that, like we can say, it's a way or method used by the attacker to misuse or take an advantage of the vulnerability in the network protocol. Okay, so this is the exploit we can say, and there is some threats also available. Okay, so threats means there is a many type of the threats, guys, in available in this today's market and today's environment. Okay, so we can say this is a phishing mail. Okay, suppose this is a phishing, social networking, encryption, ransomware. Okay, in I think 2017 we faced the ransomware attack. Okay, trojans. Okay, worms. So there is a multiple type of the these threats are available. Okay, so this is a one type of the network security terminologist part. Okay, what is the threat and everything you can say. Okay, so if whatever anything is harm for our network, it's like we can say threat. Okay, and we can prevent that threats from the through our firewall only. Okay, so we will check like how to. There is a multiple option is available. Threat prevention we can say. Okay, so there is multiple things are available like antivirus, anti-spyware, vulnerability. Okay, so then we have to create that profile on the Palo Alto firewall, and that profile we have to apply on that particular security rule. Then whatever the traffic comes from the Palo Alto firewall through Palo Alto firewall, then it will check what type of the data is traveling through. Okay, then it will scan all the data. If any vulnerability found, then if any threat virus is found, any spyware ad supported software is found, then it will drop the Palo Alto drop the traffic. Suppose let me give you the example. Okay, so there is a one system is available and this connected with the particular switch, and switch connected with this Palo Alto firewall. Okay, and there is a internet. Okay, and out of the internet there is a one server is available. Suppose this is a torrent web service is available, guys. Okay, then if this particular user wants to download this torrent one software from this torrent site. Okay, so what will happen? Okay, so he requested for that access, download the access. Okay, then he start the downloading, but data will come first of all come to, here comes to here on the Palo Alto firewall. Then Palo Alto firewall what will do? It will scan the data, what the type of the data is available. Like it will scan all the data, guys, like is there any viruses and vulnerability, everything it will scan. Okay, then we have to create some profile. Okay, for the antiviruses, then anti-spyware, vulnerability, URL filtering, data filtering. Okay, then file blocking. Okay, so everything we have to create, we have to create profile, and we have to apply that profile in the Palo Alto firewall. Okay, so whenever data comes to here on the Palo Alto firewall, then Palo Alto firewall read that data. Okay, it will scan the data. If any antiviruses or virus is found, then it will block the data. Is there any vulnerability? It will block. Is there any suppose we applied the some PDF file we cannot upload and download, then is there any PDF file, then it will block the data. Okay, suppose there is some confidential details are available, like we can say in that this particular user wants to he wants to share the some data to the internet user out of the organization. Okay, and in that word file some credit card numbers also available, we can say. Okay, so that type of confidential data also we can block on the Palo Alto firewall, guys. Okay, so this there is a multiple things are available. Okay, that we will discuss in the detail, guys, one by one. Okay, in the upcoming session. Okay, so उसके लिए पूरा हमारे पास सेशन रहेगा, जैसे we can say threat ID, सॉरी कंटेंट आईडी में बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है, वो हम आने वाले टाइम में पूरा का पूरा देखेंगे. Okay, this is just overview, guys. Okay, so it's called the, we can say, threat, what type of the threats are available in the market. Then attack, it's attack action taken by attacker, it's called the attack. That's a simple, guys. And countermeasure, which means the it
prevent the vulnerability. It's called the countermeasure. As I told you, right? Like we are using the some uh, HTTP or telnet to access our internal resources or our different sites. Okay, but it's looks like it's a network vulnerability, network protocol vulnerability. So we can prevent through HTTPS. ओके एंड अनदर वन इज एसएसएच. सो आपका जो भी एचटीटीपी और एसएसएच है वो आप प्रिवेंट कर रहे हो वो पूरा वर्नेबिलिटी को, उसी को ही आप काउंटर मेजर बोलेंगे. मतलब आपका जो भी डेटा एचटीटीपी में जा रहा था और टेलनेट में जा रहा था वो पूरा प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था, राइट. बट आप यहाँ पे जब एक्सेस करोगे एचटीटीपीएस के थ्रू और एसएसएच के थ्रू, आप जब भी एक्सेस करोगे, ओके, सो दैट डेटा इट विल ट्रैवल थ्रू encrypted or secure manner, we can say secure way. Okay, सो वो पूरा का पूरा डेटा जो है सिक्योर वे में जाएगा. देन नो वन कैन मॉडिफाई डेटा. No, the data is not visible on third party devices, so we can say it's prevents against the vulnerabilities. Okay, it's called the countermeasure. So this is a guys few network terminology available. Okay, so is there any doubt? Basics things जो terminology है उसमें किसी को डाउट है guys? Guys, please confirm so like we can move. Yeah, please guys, try to ask the questions or might we have any doubts or discuss it. So it would be a win-win situation. No. Yeah. सो किसी को भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सो वी कैन मतलब आपको ओके है, देन वी कैन हम आगे बढ़ सकते हैं. और किसी को डाउट है, बिना हिचकिचाए गाइस आप बता सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोला. ओके, सर, सो यस. लेट ज्वाइन. एक्चुअली सर थोड़ा ब्रीफ कीजिए. लेट ज्वाइन किया था. ओके, धीरेन्द्र राइट. हाँ हाँ हाँ. ओके ओके ओके. सो उसमें क्या है ब्रो, लेट मी टेल यू. ओके ओके. सो फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास. असर्ट्स है, वर्नेबिलिटी है, एक्सप्लॉइट है, थ्रेट्स है, अटैक है और काउंटर मेजर है. ओके, दिस इज अ बेसिक थिंग. ओके, वही चीज आपको मतलब वो पूरा का पूरा कवर होगा. तो असर्ट क्या है, मतलब जो भी डेटा, जो भी आपका डेटा है, वैल्यूएबल डेटा है आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वही आपका डेटा, वही को असर्ट बोलेंगे. मतलब वो कुछ एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में कोई पर्टिकुलर डेटा है, आपका कोई कंप्यूटर है, सिस्टम है, बहुत सारे सर्वर्स है, वही आपके कंपनी के लिए वो असेट है. ओके. वर्नेबिलिटी, वर्नेबिलिटी में क्या है कि वो बहुत सारी वर्नेबिलिटी होती है. जैसे आपके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्नेबिलिटी है, राइट. नेटवर्क प्रोटोकॉल में वर्नेबिलिटी है, जैसे आपका एसएसएच हो गया, सॉरी एचटीटीपी हो गया, टेलनेट हो गया, तो वो एक वर्नेबिलिटी है. ठीक है. जब भी आप डेटा, यहाँ एक राउटर है और यहाँ पे कोई दूसरा कंपनी का कोई राउटर है और यहीं से आप टेलनेट एक्सेस करोगे ना, तो जो भी डेटा जाएगा ना वो गाइस प्लेन टेक्स्ट में जाएगा दिनेंद्र. ओके. सो वो पूरा का डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, तो इंटरनेट पे कोई भी बंदा रहेगा ना वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये पूरा का पूरा, मतलब इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, उसका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और वो आराम से यूज यूज कर सकता है. ठीक है. सो इट्स कॉल्ड द वर्नेबिलिटी गाइस. ओके. एक्सप्लॉइट में क्या होता है कि आप कौन से मेथड्स के थ्रू आप वर्नेबिलिटी पे अटैक करते हो. ओके. एंड थ्रेट्स, थ्रेट्स पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि बहुत सारे थ्रेट्स अभी मार्केट में, जैसे फिशिंग. इवन if you are right now you are working, most probably all of you working, right. So like your company, they are scheduled some phishing training also, like how to users are getting the some phishing mail. Okay, so आपको ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि किसी को मेल आया होगा. ठीक है. सो जैसे once you receive the mail, so you do not click that particular mail. Okay, so looks like the URL. Okay, हाँ, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि जैसे हमारा कोई एक URL है, https://www.google.com. ओके, बट आपका ये वाला ऐसा दिखेगा, बट जैसे आप फिशिंग मेल रहेगा ना, तो जैसे आप वहां पे कर्सर लेके जाओगे ना गाइज, सो वो पूरा यूआरएल ही डिफरेंट दिखेगा. ओके. सो डोंट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर यूआरएल. ओके. सो आपका वो फिशिंग ईमेल भी वो बोल सकते हो. ठीक है. सो फिशिंग ईमेल के लिए आपको बहुत सारी, आपको कंपनी में ट्रेनिंग भी दी जाती है कि क्या क्या करना है उस टाइम पे, आपको रिपोर्ट करना है जो भी आपके टीम है जो. ठीक है. तो आप उसको पर्टिकुलर मेल को आप रिपोर्ट कर सकते हो. इवन जो भी मेल आएगा तो आपके मैनेजर्स भी आपको बता सेंड मेल सेंड करते हैं, या कम्युनिकेशन चैनल पे जो भी रहेगा. ठीक है. सो इजीली आपको पहले से बता दे कि डोंट क्लिक ऑन दिस मैसेज और डोंट फॉरवर्ड दिस मैसेज और डोंट ओपन दिस मैसेज. और अटैच फाइल में भी आपको मालूम रहता है कि अगर आपने कोई फाइल भी अटैच कर दिया ना गाइज, तो फाइल भी पर्टिकुलर वो एक आपको तुरंत इंस्टॉल, वहां पे कोई वायरसेस वगैरह जो भी रहेगा ना वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में.
So we can say it's the threat, phishing mail, everything we can say. Okay. Then सेकंड वन इज अटैक, मतलब जो अटैकर यूज करेगा कोई पर्टिकुलर सिस्टम को, उसी को अटैक बोलेंगे। और काउंटर मेजर में क्या है कि जो भी आपकी वर्नेबिलिटी है, जैसे आपने यहाँ से यहाँ राउटर को एक्सेस किया, आपने पहले टेलनेट किया किया था, राइट? सो यू एक्सेस थ्रू टेलनेट ओनली, बट इफ यू यूज द SSH इंस्टेड ऑफ द टेलनेट गाइस, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका डेटा है ना गाइस, वो पूरा का पूरा सिक्योर वे में जाएगा। अगर कोई यहाँ पे कोई बंदा भी रहेगा ना, हैकर यहाँ पे इंटरनेट पे, तो वो एक्सेस भी करेगा ना ये वाले पाथ को और डेटा चेक करेगा, तो उसको पूरा का पूरा इंक्रिप्टेड दिखेगा, ABCD 1 2 3 एनीथिंग, कुछ भी दिखेगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये डेटा कौन सा है। ओके, सो दिस इज द नेटवर्क सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक थिंग्स है जो CCNA में सिक्योरिटी में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ओके, सो अभी दिनेंद्र, एनी डाउट ब्रो? हेलो धीरेन्द्र, ऑल क्लियर गाइस? एनी Hey, डाउट? I have one Sorry, sir. concern. Yes, got it, sir. I have one concern. So Yes, what is the difference between firewall security and our vulnerability security? firewall security. Yeah, Okay, so firewall security, it's like there is a multiple things that's available, like bro, like RK, right? yeah. Yeah. Okay. So in the firewall security, there is a profile we have to create. Okay. Firewall, what will do? It will block the all traffic. Okay, so once you like purchase the any firewall, any vendor firewall, like suppose checkpoint firewall, so there is a one rule is available. Okay, so suppose any rule is any traffic is available, but when is a one by default rule is available, which means any source to any destination, okay, any service port traffic is blocked or deny. Okay, so this is the one basic rule is available. Okay, in the Palo Alto firewall also is the one two rules are available. Okay, but one rule we can say is a similar rule. Okay, so any source, any destination, any port, any application, it will traffic will be the deny. Okay, so whatever traffic you want to allow, okay, you want to allow that you can allow. Suppose from 10.1 to 20.1, you want to allow 443. Suppose application is facebook.com, or you want to allow, then you can access that particular. You can create a one rule. Okay, and in this particular rule, okay, so suppose whatever the ये वाला particular user है और ये वाला destination server है. Okay, so access करा है facebook.com. Okay, but in the facebook.com there is a chat option is available, right? So someone will send the some chat, in the chat they are sending the some files and everything. Okay, so file में कौन सा data जा रहा है? Okay, that data also we can scan through Palo Alto firewall. Okay, and if it is malicious data and everything, we can block through firewall. So this way we can use the firewall. Okay, Thank you, got it. Thanks for detailed explanation. So, thank sir, you. this हाँ is, जी. I think, implicit rule, na? So, implicit rule, हाँ, I think, implicit available in rule, all हाँ, OEM, yes, हाँ, all implicit rule OEM, में right? जैसे आपने that's the implicit rule is available in the checkmate firewall, we can say, but here in the Palo Alto firewall there is a two rules are available, which means the in the same zone. Okay, Palo Alto firewall is working on a zone based, guys. Okay, we can say zone based firewall as well in the Palo Alto firewall. So वहां पे क्या होगा कि zone based firewall में जो भी आपका zone रहेगा, जैसे inside zone है. Okay, let me rub this out first. Okay, so suppose 1 second. Here we have a space. Okay, so suppose this is a one machine. Okay, there is a Palo Alto firewall. Okay, and there is a internet, and there is a another server. Okay, suppose this is the inside zone. Okay, Palo Alto work on the zone base only. Okay, this is a DMC zone, and this is a outside zone, which is our external site. Okay, so we will cover in this detail in the upcoming session, but let me tell you overview here. Okay, so जब भी आपका inside से outside जो भी मशीन जाएगा, ये वाला inside मशीन जब भी आपका outside में एक्सेस करेगा ट्रैफिक को, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रूल बनाना पड़ेगा। Palo Alto firewall पे बाय डिफॉल्ट टू रूल्स क्रिएटर रहता है गाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रा zone and second one is a inter zone. Okay, इंट्रा जोन मतलब क्या है?
विद इन अ जोन, मतलब विद इन अ जोन में जो भी आपका यहाँ से यहाँ कोई मशीन रहेगा, ठीक है, तो उसको कम्युनिकेशन करना है, पॉलिसी रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्टली वो एक्सेस कर पाएगा, कोई जरूरत नहीं। बट यहाँ से बंदा को यहाँ पे एक्सेस करना है तो यू रिक्वायर बाय डिफॉल्ट वो डिनाई रहता है ट्रैफिक को। तो जब भी आपको इनसाइड से आउटसाइड या इनसाइड से डीएमसी जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है, यू हैव टू क्रिएट अ रूल अबाउट दिस रूल। ओके, दिस इज अ बाय प्री डिफाइंड रूल इन द Palo Alto Firewall। ओके, दैट वी विल कवर इन द अपकमिंग लेक्चर। यहाँ पे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं और कितने हद तक मॉडिफाई करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके दिनेंद्र, ऑल गुड? Sorry, sir. हाँ, ओके, okay, okay. थैंक यू सो So, मच। ओके, हाँ जी। just a reference, I think, just brief about the UTM firewall, zone based यूटीएम में क्या है ब्रो? and यूटीएम में ठीक है, ओके। NGFW. हाँ, यूटीएम में क्या है कि यूटीएम में आपको मतलब वो आईपीएस के लिए आप वो कर सकते हो, एक मॉडेम लगा सकते हो, राइट? वो यू हैव टू अलाउ द सम मॉडल्स आल्सो। ओके, लाइक मॉडल आईपीएस के लिए, आईडीएस के लिए लगाना है कुछ भी, तो इंडिविजुअल मॉडल लगा सकते हो। बट यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन नहीं, फायरवॉल, IDS I think different hardware device ना, IDS. यस यस यस, सो यू हैव But टू हाँ, यू हैव टू अप्लाई द मॉडल आल्सो। ओके, बट यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, Palo Alto फायरवॉल में क्या है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द सिंगल बॉक्स ओनली, single box, okay, okay. सिंगल बॉक्स। नहीं, ओके, in Fortinet, just entry level is only UTM